So the next one is electric field due to a system of charges. Electric field due to a system of charges और electric field intensity due to system of charges भी अब बोल सकते हैं. Electric field intensity due to system of charges. Title itself indicating here that is electric field due to a system of charges. What it means? System of charges in the sense more than group of charges, more than one charge. So we are calling here due to number of charges we are brought towards at a point of P, then on that point of P how much amount of electric field it is there, or we call it as electric field intensity, that we have to find out. So at a particular point due to number of charges, let me consider here. हमने यहाँ पे consider करते हैं P बोलने वाला एक point है यहाँ पे. This is the point of P, and a region around that point of P we have, that is a number of charges. Say here it is Q1, and that is Q2, and similarly that is Q3, so on, that is a Qn. Likewise, number of charges present near the point of P, and now we have to find out what is the total electric field intensity at a point of P due to placed number of charges near the region of P. अब वो सभी चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. इससे पहले हमने क्या कैलकुलेट किए थे अकॉर्डिंग टू दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज अ सम ऑफ फोर्सेस वी आर एडेड टुगेदर. एक ही पॉइंट, एक चार्ज के ऊपर दूसरे नंबर ऑफ चार्जेस कितने फोर्स डाल रहे हैं वो फोर्स F इज इक्वल टू दैट इज वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऑन हमने जो कैलकुलेट किए और सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें नेट फोर्स कितने एक्सर्ट हो रहे हैं एक सिंगल चार्ज पे हमें पता चला था. तो सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस इस पॉइंट P पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या फैलने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यहाँ पे एक चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे एक चार्ज, इसके सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस P बोलने वाले पॉइंट पे कितना आ रहा है. हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ P, दैट वी हैव टू फाइंड आउट बाय दैट इज अकॉर्डिंग टू अगेन वी विल यूज हियर दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ऑन द बेस ऑफ दैट द टोटल नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज हाउ मच एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट ऑफ P, दैट वी विल कैलकुलेट हियर. अब यहाँ पे P के ऊपर Q1 की वजह से कितना हो रहा, Q2 की वजह से कितना हो रहा, Q3 की वजह से एंड Qn की वजह से हम देखेंगे. सो Q1 इज सेपरेटेड एट a distance of R1, okay, at a distance of R1. So due to that electric field intensity E is exerted, we may call it as E1. So between them there is a force that is F1. Similarly, that is Q2 is located at a distance of R2, and that is electric field intensity E2 due to the force that is vector force F2. Similarly Q3 which is located at a distance of R3, that is vector F3, and electric field that is vector E3. And similarly for Qn, so which exerted a force vector En due to force Fn. Are you clear regarding this? हमने कुछ चार्जेस उस P के रीजन में ले लिए हैं और उस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट हम E1, E2, E3, E4 कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ दैट इज एडिशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी विल ऐड टुगेदर, दैट इज वी विल टेक वन बाय वन. Consider a charge. Consider a charge or consider a point P. Consider a point P at a distance. और यहाँ पे हमने point P consider किया और else. Consider charge Q1. Consider a charge
q1 at a distance r1 from point P, पॉइंट P1 से कितने दूरी पे है, R1 दूरी पे, और which exerts electric field of vector E1 and charge q2 is at a distance of r2 which exerts or which gives electric field of vector E2 and so on. Qn is located at a distance of Rn, which exerts electric field En, vector En. And now we will use that is the principle of superposition, that is vector E is equal to vector E1 plus vector E2 plus vector E3 plus so on. So before that, this total electric field intensity or electric field we have to calculate, that is electric field due to individuals. So now vector E1 is equal to, so 1 by 4 pi epsilon naught, that is q1 divided by r1 square into unit vector r1. Okay, then ये वाला मिल गया, we may call it as equation number 1. And due to second charge, vector electric field E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q2 divided by r2 square into r cap, that is E2. ऑलरेडी आपको बोले अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q, इसका वैल्यू आया था आपको 1 by 4 pi epsilon naught, दैट इज कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर. सो सिमिलरली एक ही जो चार्ज एक चार्ज वहां पे सोर्स चार्ज की वजह से जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया 1 by 4 pi epsilon Q by R square. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट ए पॉइंट ऑफ P 1 by 4 pi epsilon Q by R1 square. सेकंड चार्ज की वजह से 1 by 4 pi epsilon Q2 upon R square. एंड थर्ड सिमिलरली इन थर्ड E3 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q3 upon R3 square into R cap, call it as 3, and so on. What is the vector En is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, that is Qn divided by Rn square into vector R cap, or call it as equation number 4. Now we have to find out net electric field at a point P is according to principle of superposition theorem. So we can write it as E is equal to vector E1 plus vector E2 plus vector E3, E1 plus E2 plus E3 plus so on, that is plus vector En. तो यहाँ पे रखिए वैल्यूज. So vector E is equal to, what is the value of E1? E1 की वैल्यू क्या है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 square into R1, that is R cap. Similarly plus 1 by 4 pi epsilon naught
Q2 upon R2 square into R cap plus so on, that is 1 by 4 pi epsilon naught, that is Qn upon Rn square into R cap. ओके अब आपने कॉमन टर्म्स क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द कॉमन टर्म्स, लेट विल टेक वेक्टर E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके कॉमन. सो बच गया कि यहाँ पे देखिए, सो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस so on plus Qn upon Rn square into R cap. So how we can write it as in the summation? Okay, we will see now. So we will see here, that is vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, that is how we can write it as summation of I is equal to 1 to Q1 R1 R2 R3, sorry R1 R2 R3 so on Rn, Q1 Q2 Q3 so on Rn. So Q is equal to, sorry, I is equal to 1 to n, so Q of I divided by R of I square, so into, that is unit vector R cap. This is therefore total electric field intensity or electric field 1 by 4 pi epsilon naught summation of I is equal to 1 to, sorry, I is equal to 1 to I is equal to n, that is Qi upon Ri square into R cap. This is a expression for electric field due to a system of charges at a point of P. So that is a total electric field exerted. So on we may calculate further. This is the important expression. Again we may use further in a continue while solving numericals, as well as for deriving further derivation we will use that expression. Okay, are you clear? We will proceed further.